People of India, I warned you, nobody listened to me. I warned you, be careful. The world is looking at us and the world is talking and they are saying Pakistan is cooler than India. Temperature. At the moment, it's called the week that wasn't. Okay, people, now this week we observed on May 1st, Labour Day in India. In Maharashtra, of course, it's called Maharashtra Day, or as I like to call it, after having filled petrol only that morning, Inflation Day. Of course, Maharashtra celebrated Maharashtra Day in the typical way, stopping all private vehicles from moving at 6 a.m. in the morning due to VIP movement. What are they doing? It's like they actually stopped me. I'm not lying about this. 6 baje, VIP movement. Manje. That's it. Nobody has an answer for that. Anyway, that's how you know you're in a first world nation, folks. The moment a minister goes for a 5-minute drive and the whole city must come to a standstill. Democracy comes to those who stand and wait. We stand and wait, they drive. Indian cricketer turned commentator Arun Lal got married to Bulbul Saha. Now, Bulbul is 38, Arun Lal is in his mid-60s and is a cancer survivor. So, in cricketing terms, he started as an opener and now he's back as a night watchman. No, but we wish him all the best. Arun ji, we wish you all the best. No, that was the original partner. One second. Confusing. Sunny and Arun Lal, that partnership is very different. Let's move on. Sanjay Raut asks, why world leaders are taken to Gujarat and not to Mumbai? I'll tell you, Sanjay bhai, I'll tell you. Because every time you want to go for a drive in Mumbai, the whole city has to come to a standstill and stop and watch you drive. All right? On top of all this, you want world leaders to come here. We'll never leave the house. It's worse than pandemic. Matana world leaders. Go away. Don't suffer this. You have to stand there and watch these guys go up and down all day while everybody goes, get out of the way, VIP. Manje? Russian President Vladimir Putin may be forced to give up control of the war in Ukraine as he is set for cancer surgery. Now, please keep in mind that Putin is at a point in his life where he doesn't trust anybody at all. So, he's obviously performing the surgery himself. I can't believe that somebody would act out a surgery on himself. I mean, that's worse than what Putin is doing to Ukraine. Honestly, I apologize completely for that. Please don't watch this show in future. Please, I apologize. A SpiceJet plane faced severe turbulence and it had a peculiar fallout literally. Due to the turbulence, the luggage fell out of the overhead compartment, leading to 40 passengers suffering minor injuries. Now, apparently, to compensate the passengers, they were not charged for the 150 ml water bottle given to them. Those small bottles you get in the beginning, which you can't open because it's very tight. They were not charged for that. So sweet. That's a great gesture. I feel it even now. About that, I think we should redesign airplane seating arrangements. Now, wouldn't it be better if we sat overhead and the bags were below us? I mean, better that we injure the bags and the bags injure us, no? They can tell the bag, be careful. They might fall on you because of turbulence. It makes more sense. The dean of GMC, Madurai, has been removed after the students took the traditional Hippocratic oath in Sanskrit. Now, this was found out when student after student was unable to provide the Sanskrit translation for the word Hippocratic. Latin shabd. This language is very confusing. Language is not easy to translate. Lots more coming up, but first the headlines. Loudspeaker controversy loudens. Language war continues. Putin to undergo cancer surgery. And IPL fans' reaction. It's amazing. This show is called The Week That Wasn't, as you very well know. And it's been our endeavor from the beginning that whatever happens outside, we stay on the air. It doesn't matter. And if you look around at other people, businesses are failing because of inflation. People are going berserk because of the heat wave. People can't handle their lives because of the pandemic. Broacha. क्या नाम है Broacha तेरा? कौन है तू? हाँ, सुन बे, सुन. तेरे को मैं वार्निंग दे रहा हूँ. ये प्रोग्राम हिंदी में कर तेरा. ये हिंदी में होना चाहिए सब. हिंदी इज ए नेशनल लैंग्वेज. अंग्रेजी में बोला ना, मैं फिर वहीं आके मैं बता रहा हूँ. You will have to face the consequences. हिंदी में होगा प्रोग्राम. हिंदी में होगा. और बोल, तू बोलेगा मेरे साथ. बोल, जुबा केसरी. बोलेगा नहीं. मान लिया, but बोलेगा नहीं. I want to point out to the viewers, I'm not sure this is part of the comedy. This is India. We live in a country where these things happen, so we are not sure if it's a joke or not. In fact, nobody ever is. That's why we always say, okay, theek hai. We're not sure how to respond. But before we go into our top story, the heat wave has been horrible. It's really, really hot. The last 7 days, Maharashtra especially, really bad for people here. Request and appeal from the authorities. Can you please leave the country?
just for a little while. हाँ, जब ठीक हो जाएगा मौसम, when you come back, we'll give you a message. Please guys, do the right thing. And now let's go to our top story. The Hanuman Chalisa Row turned into a full-blown political battle in Maharashtra this week. Raj Thackeray, who was not been seen for many years, maybe it was COVID, we don't know, had demanded that the state government should remove loudspeakers from mosques, and it said that if mosques continue to use loudspeakers for azan, MNS workers would recite the Hanuman Chalisa in front of mosques on loudspeakers. Is it on loudspeakers or in loudspeakers? वो हिंदी वाला को बुलाओ. On या in? क्या पता नहीं. What does this lead to? Let's find out. Let's take a look. अरे हम क्यों बंद करें हमारे लाउड स्पीकर बजाने का हमारा पुराना रिवाज है. हम सालों से लाउड स्पीकर बजा रहे हैं. तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? तुम लाउड स्पीकर बजाते हो और हमको सुनना पड़ता है, तो हम क्यों नहीं लाउड स्पीकर बजाए और तुम हमारा लाउड स्पीकर सुनो. पहले लाउड स्पीकर हम बजाएंगे, तो पहले हम बजाएंगे. गणपति, नवरात्रि, अगर तुम लाउड स्पीकर बजा सकते हैं तो हम क्यों नहीं बजा सकते. वैसे भी सबसे बड़ा लाउड स्पीकर हमारे पास ही है. सबसे बड़ा लाउड स्पीकर? कौन सा लाउड स्पीकर? राज साहब ठाकरे. हमारा लाउड स्पीकर भी काफी बड़ा है. सबसे ज्यादा आवाज करता है राज ठाकरे से ज्यादा. सुना के नहीं? कौन सा लाउड स्पीकर? असाउद्दीन ओवैसी जी. सबसे ज्यादा शोर हमारे लाउड स्पीकर करता है. अरे हमने सुना है तुम्हारे लाउड स्पीकर कोई भी भाड़े पे ले सकता है, और हमने सुना है कि तुम्हारे लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कंट्रोल किसी और के हाथ में है. अरे वो छोड़ दो, हमारे पास और एक बड़ा लाउड स्पीकर है. उससे बड़ा लाउड स्पीकर आपके पास भी नहीं है. कौन सा लाउड स्पीकर? संजय राउत. ये बात तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है. संजय राउत अपने खुद की ही गाने लगाता है, उसका कुछ भरोसा नहीं. अरे तो तुम्हारे लाउड स्पीकर बंद करो ना. अरे तुम बंद करो. तुम कौन होते हो हमारा बंद करने वाले? हम अपना लाउड स्पीकर यही बजाएंगे. हम भी अपना लाउड स्पीकर यही बजाएंगे. देखता हूँ कौन रोकेगा. हनुमान चालीसा बजाने से कौन रोकता है देखना चाहता हूँ मैं. हनुमान चालीसा? तुम हनुमान चालीसा की बात कर रहे हो, तो तुम किसका ऑब्जेक्शन ले रहे थे? हमें लगा कि तुम हमारे लाउड स्पीकर पे अजान का ऑब्जेक्शन ले रहे हो. नहीं तो हमें आपके अजान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें तुम्हारे हनुमान चालीसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो लाउड स्पीकर का क्या प्रॉब्लम है? हमें लाउड स्पीकर पे इसका प्रॉब्लम है. अरे बजाओ तो सही. अरे बजाओ रे. Yes, Puspa, or what we say in English when the father wants to be moved. Pushpa. हिंदी में करता है शो, अंग्रेजी में नहीं चलता है. गाड़ी बंद हो जाएगा. Let's move to Hindi. Joining us now are a few senior members of these two communities. By communities, I mean Hindus and Muslims. Don't look for something else. Maulana Azanuddin Speaker Wala, that's his name, or Pandit Hanuman Prasad Chalisia. He is not a musician, I just want to tell you. Let's meet both of them right now, sir. देखिए जनाब, हम सब भी यही चाहते हैं. सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं. हमारा एक देश है, एक मुल्क है, हम एक लोग हैं. मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हम क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों इतने फसादात हो रहे हैं. देखिए हम भी यही बात कह रहे हैं, बिल्कुल यही बात कह रहे हैं. झगड़ा किस बात का है? बस एक दो चीज़ें हैं जिससे लोगों को ज़रा परेशानी होती है बस. तो आप साफ साफ बोलिए जनाब, क्या तकलीफ़ है आपको हम लोगों से, मुसलमानों से? हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जवाब देने की, उन समस्याओं को सुलझाने की, उन तकलीफ़ों को दूर करने की. देखिए मेरी बात समझिए. पहले जैसे कि आप ईद का जो टाइम है, अरे ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक. इस बार लोगों ने बहुत कम ईद मुबारक के मैसेजेस भेजे हैं. लगता है बहुत सारे लोग भूल गए या डर गए. नहीं, ऐसी बात नहीं है. ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक. तो शुक्रिया. तो कहिए क्या तकलीफ़ है आपको, किस बारे में बात कर रहे हैं? देखिए अब ऐसा है कि लोग कहते हैं कि जब सुबह सुबह कंपाउंड में ईद के दिन आप लोग बकरा काटते हैं तो खून खराबा थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी समझ गए पंडित जी, बिल्कुल समझ गए. लेकिन एक बात ज़रा मुझे आप बताइए, ये आपको किसने कहा कि हम इस ईद में बकरा काटने वाले हैं? वो
ये अपना जो बाजू वाला चाय वाला है उसके बेटे को व्हाट्सएप आया था, उसमें लिखा था पंडित जी ये ईद उल फितर है, इस वक्त बकरा नहीं काटा जाता, हम सिर्फ उपवास करते हैं, रोज़ा रखते हैं। उपवास? जी। अच्छा, उपवास जैसे हम लोग रखते हैं? जी जी बिल्कुल, वजह फरमाया आपने। अच्छा अच्छा, हमारी भी तो अक्षय तृतीया थी, तो हम लोग भी उपवास करते हैं। उस दिन हम वो साबूदाना खिचड़ी खाते हैं और श्रीखंड, मालपुआ, ये सब। मालपुआ? हाँ। अरे भाई, हमारे यहाँ भी बनता है मालपुआ। आपके यहाँ मलाई के साथ बनता है कि मलाई के बगैर? अरे अब हमारी तो उम्र नहीं है मलाई खाने की, लेकिन मैं आपके घर में गर्मा गर्म जलेबी भिजवाता हूँ। हाँ, आपके घर पे भी जलेबी बनती है? अरे गरम गरम जलेबी दूध के साथ, आहा हा हा, आनंद आ जाता है। अरे जनाब, हमारी बेगम ने तो हमारा दूध, मलाई, जलेबी सब बंद करवा दिया है। अच्छा, और क्या बनाते हैं आप लोग रमजान के दौरान? अब देखिए, जलेबी तो बनती है, लेकिन जलेबी के साथ साथ बिरयानी भी बनती है, लजीज बिरयानी। क्या हुआ जनाब? मटन की बिरयानी आप खाते? नहीं नहीं नहीं, घर में नहीं, घर के बाहर बिरयानी इज माय फेवरेट फूड, सबसे पसंद है। तो मैं भिजवा देता हूँ आपको। लेकिन एक बात है, हाँ, बड़े का नहीं, बिल्कुल बड़े का बिल्कुल नहीं। अरे नहीं 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 जनाब, चिकन या मटन या अंडे की बिरयानी, और आप कहें तो आपके लिए वेज बिरयानी भी बना देंगे। भाई देखिए, बड़े की तो हम भी नहीं बनाते, और बनाएंगे भी तो आपके यहाँ क्यों भिजवाएंगे? आपका धर्म थोड़ी भ्रष्ट करना है? वही तो मैं कह रहा हूँ। अब देखिए कितनी कॉमन चीज़ें हैं हम में और आप में। यही बात मैं भी आपको कहना चाह रहा हूँ। एक बात बताइए जनाब, ये अक्षय तृतीया हनुमान जी का त्योहार है क्या? नहीं नहीं, अक्षय तृतीया तो वो फेस्टिवल है जिसमें हम लोग नई शुरुआत, शादियाँ, एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, जो भी अच्छी शुरुआत होती है नई, वो करते हैं, और उसके लिए व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, और दान दक्षिणा देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो फिर ये हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर क्यों बजा रहे हैं आप लोग? अरे नहीं नहीं नहीं, हम कहाँ बजा रहे थे। अक्षय तृतीया के दिन अब किसको ये सब करना है? वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो अपना कर रहे हैं। हम लोग तो नहा धो के मंदिर जाके घर आके बढ़िया पूजा पाठ करके खाना वाना खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, बस। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है जनाब। ईद के दिन हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सेवई खाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके अलावा तो और कुछ लिखा नहीं है कहीं भी। तो ये बताइए कि फिर ये रूल बनाया किसने है? ये सब पॉलिटिकल पार्टीज का किया धरा है। मैं आपसे क्या कहता हूँ, आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए। हमें ना अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। कौन सी जनाब, कौन सी पार्टी? जिसमें हमारी, आपकी, मेरी, हम सब की पसंद की चीज़ें। जैसे क्या? जैसे क्या? जैसे कि बिरयानी, और जैसे कि जलेबी। हाँ, और क्यों ना हम अपनी इस पार्टी का नाम रखें बिरयानी जलेबी पार्टी। हाँ, बिरयानी जलेबी पार्टी, बीजेपी। बीजेपी नाम तो सुना ही होगा। बीजेपी, वॉचिंग यू, वॉचिंग मी। अबे ओ ब्रोचे, क्या तेरा दिमाग खराब है? पागल है क्या साले? हैं? देशद्रोही कहीं का। अबे ये प्रोग्राम बकवास है तुम लोगों का, और ये बकवास भी होगी ना तो हिंदी में होगी। वैसे मैं नहीं जज कर रहा तुम्हारा प्रोग्राम क्या है, कूड़ा है, जो भी है, इट्स नॉट माय जॉब। लेकिन जो भी बकवास करनी है, जो भी कूड़ा, जो भी टट्टी करनी है, हिंदी में होगी, हिंदी में। ये फाइनल वार्निंग है, मैं बता रहा हूं, अदरवाइज यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, नहीं तो मैं आ रहा हूं स्टूडियो। ए सुन, ए चिंटू, ये लगा है भरूचे का, जरा स्टूडियो का पता बता मुझे। हाँ भेज, गूगल पिन भेज। हाँ हिंदी, अबे हिंदी में भेज। अबे हिंदी इंग्लिश क्या होता है? गूगल पिन एक ही होता है। हाँ ए भरूचे, बोल जुबान केसरी। सच बताओ तो एग्जैक्टली लाइक माई वाइफ।
tonality, philosophy, सिर्फ वो हिंदी में बात नहीं करती है, मगर बाकी सब same to same है. Anyway, let's go on. We have to take a break from all these painful things that are happening. It's difficult being comedians. Firstly, our comedy is not good enough. Secondly, to get protests outside a not good comedian is really bad, yaar. We'll take a break and then come back. Standard bhi ek cheez hai, bhai. Have standards in life. Taking a break. Welcome back to the week that wasn't. Raj Thackeray! Oh, sorry. I thought, because I thought if I, then the loudspeaker ka point bhi aayega usme. I don't know why I'm doing so much Hindi now out of fear. Raj Thackeray is going on with his drive against loudspeakers. Critics say that this is cannibalistic because he himself is like a loudspeaker. And that's coming from me. Speaking of loudspeakers, Shoaib Akhtar says he bowled a delivery at 164.7 miles per hour. Now, people are rubbishing this claim. But what's the big deal as far as Pakistan cricket goes? I mean, he's saying he bowled a 164-kilometer delivery. He's not lying about his age, na? Use your head. This is allowed. The heat wave in Maharashtra will continue for another week. Then Raj Thackeray will stop talking. Darwaza locked hai, na? Just for safety. Let's go meet a man who has been involved as a foot soldier for the MNS in their loudspeaker Hatao campaign. He's right there. We'll go understand the campaign better once we talk to him. Sir. या ना लवकर तुम्ही 1 2 3 4 तुम्ही सगळ्यात लवकर या तुम्ही दोघं Okay. Yeah, excuse me, sir. One sec. Sir ji. तुम्ही दोघं रे त्याला नाही त्याला पण पकडून आण हा तुम्ही दोघं तिला नको तुम्ही फक्त तुम्ही दोघं Sir. Sun, sir. What are you doing? आता अरे आजोबांना पकडून आण ना त्यांना लहान पोराला पण आण त्याला पण आण तुम्ही त्या गाडीवाल्याला घेऊन ये ना. Firstly, it sounds like a lady's voice. I don't know. I can't understand. Can anyone tell me what's he doing? Yes, I'll tell you. He has been transferred. Transferred? Yes, he is no longer working for MNS. He is now working for his masjid. What? From MNS he is now working in a masjid? What happened? Yes, this guy in this mohalla are friends with Raj Thackeray. Okay, so? So they asked for a replacement of loudspeaker. तो big loudspeaker की जगह this is it. This is our loudspeaker. Carry on. चालू रहा. अरे या अरे अजान करायचं ना या ना लवकर ते चौघांना तुम्ही चौघ जोरात होईल आवाज या लवकर I have to tell you, as a sensitive human being, I prefer the loudspeaker to that. I mean, I'll just like to put my point across the table here if you don't mind, because that was the worst sound in the history of sound. Oh God. Okay, ladies and gentlemen, apparently Russian president for life, Vladimir Putin, is suffering from abdominal cancer and Parkinson's disease. So let us speak to an Indian doctor who is treating him at this time, this week, in fact, it's going on right now, a certain Dr. Arunesh Rajadaksha. Hello, doctor. Hello, doctor. No, I'm not a doctor. Oh, but I'm also not a doctor. What? If you're not a doctor, why are you treating President Putin? Oh, that is why you contacted me. Yeah. See, actually, I'm a donor. Oh, you're a donor. Yes, I will be donating my organ to him. That sounds a little vulgar. I don't want to go into that. No, not like that. Okay, so what exactly would you be donating to him? My abdomen. Your abdomen, your stomach. Yes. So there is good news and bad news for President Putin. Amazing. Go on. Good news is he will get a functioning abdomen again. That's true. And bad news? Bad news is he will no longer have a six-pack. No, that's, I don't think, I mean, I don't have a number that will justify that. Yeah. But how will you survive without a stomach, sir? Oh, very well. You see, I've been trying to get rid of my stomach for the last 43 years. I see. So win-win. Win. 3 wins. 3 wins? Yes. Don't forget Russia in Ukraine. Unnecessary, sir. Unnecessary. But fascinating your observations are, I must say. There is more. The bigger challenge is dealing with his Parkinson's. Of course. At present, we can't understand his words. I mean, whether he said invade Ukraine or it's going to rain. It's still not clear. Oh my, now you're telling us? Now? My God. So who's in charge when Putin goes under the knife at this point? Who's running the country? Well, they are saying some ex-spy chief, Nikolai Patrushev. But I think that is all a ruse. A ruse?
sorry, Rus is Hindi for Russian. Let me use another word. Decoy. It's a decoy. Decoy? A Trojan horse. What the hell are you talking about? See, Patrushev will pretend to be in power, but in reality, Putin is leaving Russia in the hands of the one and only man who he truly trusts. Really, who? The man who has always stood by him. Who? A man whose loyalty is unquestionable. Arey Baba, who? A man whose focus will be extraordinary as he is out of a job. I'm begging you, for God's sake, who are you talking about? Imran Khan. And who will bowl from the other end? He's all-rounder, na? Enough of the humor. Now let's go to the IPL section where there's no humor whatsoever. The matches are boring and not ending. And of course, what's happening to our spectators who are watching, the audience, the people who love the game. Let's take a look. Sweetie, Go away. sweetie, I'm sorry. Look, I got you a gift. What is it? It's something that will make you look really beautiful, really beautiful. Okay. Okay, show me. What is it? No, first you close your eyes. Okay. Close your eyes, close your eyes, Can I look? close your eyes. See? So much better. Now you're looking really beautiful. Wow, I love you. What a show this has been here, full with drama and all kinds of things happening outside ए भ्रूचे, तू सुना नहीं ना मेरी बात. रुक, अभी मैं तेरे को हिंदी में समझाता हूँ. अब मैं तेरे को उधर ही आके हिंदी में बताऊंगा. रुक. Yeah, I can see you're in the building lobby. You've reached our building lobby. I can see that. But why is my sound guy Matosh? Yes, that's the guy standing next to you. चुप. क्या है कि मेरे पैसे खत्म हो गए तो मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं है, इसलिए मैं भाई साहब 25 रुपए होंगे टैक्सी के लिए. काय 25 रुपए. काय बोलतो तू? हैं? काय बोलतो? क्या बोल क्या रहा है ये? Ek second. He's saying talk in Marathi. He doesn't speak Hindi, only Marathi in Maharashtra. अरे हिंदी नहीं आती क्या? मराठी. अरे मराठी नहीं, हिंदी में 25 मराठी काय पाहिजे? मराठी. अरे नहीं, अरे यार अजीब समस्या है, उसको अंग्रेजी क्या चल. मुंबई है मराठी. You see, this Hindi nationalism, I'm all for it. But it's very difficult when you come to different states. Because you have to first fight with the regional language, then with the elite language, and then fight with somebody else who's from another state who wants to talk another language. So it's not going to be justified easily. I'm with you, Hindi nationalism, but we are looking at a losing battle, quite frankly speaking. In fact, Hindi nationalism and TWTW are the same, a ship that is sinking. SOS. Hindi में क्या होता है SOS? Sir, oh sir! Sir! Oh, Marathi. That sounds like Marathi, na? Sir! It's very confusing. Yaar. ये बहुत confusing बात है. I can't handle these language disputes. It's one man's language is another man's language also. Sir, hello. The Hindi is so dangerous. I'll change quickly and come. Pack up करने के लिए देखो, very good. काय? Shall we start? तो देने का अभी आधा घंटा में प्लेटफॉर्म.